Hello, the students of class +2। अभी का जो हमारा टॉपिक है विच इज़ रिलेटेड टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड द चैप्टर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक potential. Okay, as you know about the electric field, what is electric field? Similarly, what is electric potential? You know, the electric field can be described in the two ways. One is by electric field intensity, you can say by electric field, and second is by the electric potential. Now the question is, what is electric potential? The potential is nothing but energy. Okay, electric field and electric energy means electric potential means electric energy, and suppose that a charge is a Q charge। ओके, हमें ये भी पता है कि इस चार्ज का जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, a space around a charge within which its influence can be experienced by the other charge। अब सपोज करो इसके पास हमें कोई चार्ज लेके जा रहे हैं। अब होता क्या इसमें, ये जो चार्ज जो है इस चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, उसको पीछे की ओर धकेल रहा है। जैसे जैसे हम यहाँ पे आगे की ओर बढ़ते जाएंगे, उसको एट दिस पॉइंट और एट दिस पॉइंट, what will the force? इट मीन्स कि हमें यहाँ पर जो है कम फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी टू मूव दिस चार्ज टुवर्ड दिस चार्ज, और यहाँ पे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। What does it means? It means that the potential of this charge is greater at this point than this point। और हम एक चीज़ और कह सकते हैं कि यहाँ पे जो इसकी एनर्जी है, मान लेते हैं 10 और यहाँ पे इसका एनर्जी कितना है 20 है, तो हमें क्यों वहाँ पे इसको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ रही है? ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस। तो इट मीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेज़र करने के लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे। ओके, इसका मतलब यहाँ पे इसकी एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ पे इसकी एनर्जी ज़्यादा और यहाँ पे इसका एनर्जी कम है, तो इसलिए हमें इसको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ रही है। तो चलिए इसमें हम थोड़ा सा इसको नेक्स्ट करेंगे आगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, बट इन अदर वे। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल of a charged body represent the degree of electrification। Similarly, what is electric field? Electric field भी वैसे ही था, electric field and electric potential, it means that the which represent the degree of the electrification of the body। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एक तो चेक करेंगे इसका कंजर्वेटिव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और सेकंड है हमारे पास लाइन इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, चलिए लाइन इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड
फर्स्ट हम इसमें करेंगे द लाइन इंटीरियर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. लाइन इंटीग्रल of the electric field. Consider a charge is at the origin of this coordinate axis. हमें ये पता है कि इस इलेक्ट्रिक जो चार्ज है इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पॉजिटिव चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहेगा, विच इज रेडियली आउटवर्ड. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड जो रेडियली आउटवर्ड. नाउ कंसिडर द 2 point in the electric field, in the path of the electric field A and B, and this is the path. ठीक है, एक हमने पाथ ए बी पाथ कंसिडर कर लिया इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज Q. ओके, और सपोज दैट हुज पोजीशन वेक्टर इज RA और इसका पोजीशन वेक्टर हम RB ले लेते हैं. एक कोई पाथ कंसिडर कर लिया इसमें. लेट अनदर पॉइंट P, एक पॉइंट P कंसिडर कर लेते हैं एट डिस्टेंस या पोजीशन वेक्टर R. ओके, अब सपोज दैट इसी पाथ के बीच में जो ए बी पाथ हमने कंसिडर किया है, कोई भी पाथ, तो यहां पे हमने एक पॉइंट P कंसिडर कर लिया. अब नो लेट अस सपोज दैट here a unit positive charge, suppose that there is a unit positive charge at the point P, then what will be the force on the unit positive charge at point P is equal to E. If E is the electric field at point P, okay, the magnitude of the electric field जो है at point P के ऊपर E है, then what will be the force acting on the charge, unit positive charge की बात कर रहा हूँ, equal to the electric field. Otherwise what is electric field? Electric field is equal to force upon Q. Then what will be the force on the charge due to the electric field? F is equal to QE. बट यहाँ पे हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, यूनिट. नाउ सपोज दैट इफ दिस चार्ज इज डिस्प्लेस्ड थ्रू a small distance along this path PQ dl, then the work is done in moving the charge from point P to Q. Suppose that unit positive charge is moved through a small distance PQ is equal to dl. Okay, then the small work done, the small work is done. dw is equal to
dot dl by the definition of the work. Okay, and what is the f? F is equal to E dot dl. This is the work done. Now what will be the work done? If this charge is moved from A to B, the total work done in moving a charge total work done in moving a charge from A to B is given by W is equal to, by the integration, W is equal to the integration of dW is equal to the integration of E dot dl. Okay, this is the work done in the electric field. W is equal to E dot dl. But हम बात कर रहे हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड. वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड W is equal to minus A to B E dot dl. Yeah, you can say that the line integral of the electric field is equal to work done by the electric field in moving a charge. Work done in moving a charge from one point to the another point. This is the definition of the work done. और सिंपली हम कह सकते हैं the line integral of the electric field is the work done in moving a charge from one point to the another point in the electric field. So what? एक चीज तो हमने ये निकाल लिया इसका कि तो लाइन इंटीग्रल जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो इक्वल टू द वर्क डन. अब हमें वैल्यू निकालनी है इसकी लाइन इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, सी हियर according to Coulomb's law, what is Coulomb's law? The electric field at point P is given by electric field at point P is given by E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square. Okay, so therefore the line integral of the electric field A to B E dot dl is equal to, एक तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी का मतलब डिस्टेंस आर ए टू आर बी ई डी एल कॉस ऑफ थीटा. ओके, देन पुट द वैल्यू ऑफ ई एंड विच इज इक्वल टू द लाइन इंटीग्रल आर ए आर बी 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square into dl cos of theta. Okay, now इसको नंबर बांध दे दीजिए. Then what will be the value of dl cos theta, क्योंकि हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं विद द डिस्टेंस r के साथ. So draw a perpendicular
draw a perpendicular QN perpendicular to the line, एक्सटेंडिंग जो लाइन है OP, आप सिंपली OP भी कह सकते हैं इसको, एक्सटेंडेड लाइन OP, एंड लेट दिस जो लाइन जो डिस्टेंस जो है OP जो डिस्टेंस है विद इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो है लाइंस के साथ एंगल थीटा बना रहा है उसमें, पाथ दिस पाथ AB PQ जो डिस्टेंस है. नाउ in right angle triangle PQN we have in right angle triangle this PN upon PQ is equal to cos of theta, okay, or PN is equal to PQ cos of theta, and what is the value of P? Q is equal to DL cos of theta, okay, but this PN distance is in the increasing direction of R, okay, तो हम इसको क्या करते हैं, this PN is equal to, since PN is in the increasing direction of R, so PN is equal to dr, okay, this is a very small distance, therefore dl cos of theta is equal to dr. यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट कर दीजिए तो dl cos theta is equal to dr. From 1 we have the line integral of the electric field is equal to RA to RB on the limit 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square. What is the value of dl cos theta? That is equal to dr. Now integrate this with respect to R, then we get RA to RB 1 upon 4 pi epsilon naught Q is, क्योंकि हमने R को इसको इंटीग्रेट करना है, R is to power minus 2 dr. What is the formula for the general formula for the integration of x raised to power n is equal to x raised to power n plus 1 divided by n plus 1. This is general formula for the integration. So equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q R is to power minus 2 plus 1 divided by minus 2 plus 1, the limit RA to RB. Okay, and which is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R is to power minus 1 divided by minus 1, minus 2 plus 1 is equal to minus 1, RA to RB, or equal to, put the limit minus 1 upon 4 pi epsilon naught Q into 1 upon R, RA to RB, and which is equal to minus 1 upon 4 pi epsilon naught Q into 1 upon
RB minus 1 upon RA, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट RB माइनस RA, और इसको हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 1/RA माइनस 1/RB. This is the line integral of the electric field. Okay, what will be the result? यहाँ से हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं? This is the line integral electric field is same for all the path. ठीक है, किसी भी तरह का पाथ हो, ये हमारे पास वैल्यू जो है इसके ऊपर ही रहेगी. इट मीन दैट द लाइन इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ. ठीक है, फॉलोड बिटवीन द टू पॉइंट्स. सपोज करो इस पाथ को ऐसे भी कर सकते हैं, लाइक ऐसे भी ले लेते हैं, देन हमारे पास वैल्यू यही आएगी इसमें, independent of the path. The work done in moving a charge. What is line integral of the electric field? Line integral of the electric field is the work done in moving a charge is independent of the path. So the conservative nature of the electrostatic force, ठीक है, the force, the electrostatic force जो है which is conservative in nature, and this is independent of the path followed by the charge. जब between the 2 point के बीच में कोई भी पाथ होगा, this value is same. तो इट मीन दैट पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा. यदि हम पाथ ऐसे भी कंसिडर कर लेते हैं, देन हमारे पास लास्ट का जो वैल्यू है वो ही रहेगा इसमें. दिस इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. Sometimes this is very important one. So that this is the line integral of the electric field is independent of the path. Same for all the path. This value is same for all the path. Like हम ऐसे path consider कर लो, चाहे हम ऐसे path consider कर लो. So what is conservative force? Which does not depend upon the path followed by the body. Okay. Independent of the path, so always conservative in nature. So this is the line integral of the electric field, and which is equal to the work done. Now the line integral of the electric field around a closed path. Line integral of the electric field around a closed path. Suppose that again here is Q charge X, Y and Z. Okay, अगेन हमारे पास क्या था इसमें, लाइक दिस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड. अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, पाथ हमने A to B ऐसे ले रखा था, इसमें पाथ जो हम सपोज दैट इस तरह से कंसीडर कर लेते हैं इसको. अब हम पाथ जो है क्लोज पाथ कंसीडर कर लेते हैं इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज. अगेन यहाँ पे हमारे पास पॉइंट ए है, इसकी RA वैल्यू है, और दिस इज RB. हियर कंसीडर 2 पॉइंट A एंड B. तो यहाँ पे क्या चीज़ हो रहा है, हमारे पास दो पाथ है. सपोज दैट हम इसको पहले चार्ज को A to B मूव कर रहे हैं, तो पाथ P1. फिर इसको मूव कर रहे हैं B to A, दिस इज द पाथ P2. Two path. The line integral, the work done in moving a charge from a charge from A to B
is equal to the line interior of the electric field A to B. ओके, एंड इसको हम लिख सकते हैं along path P1 and which is equal to, what is the value? हमने ऑलरेडी इसको निकाल लिया, हमारे पास वैल्यू क्या आ रही थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 1/RA माइनस 1/RB and work done in moving a charge, टेस्ट चार्ज आप उसको कह सकते हैं, from B to A is equal to the line interior of the electric field E dot dl. इसको हम कहाँ से कहाँ तक करेंगे, B to A करेंगे इसको. Okay, then what will be the value? 1/4 pi epsilon naught Q into 1/RB minus 1/RA. What will be the total work done? The total work done is equal to, therefore the total work done is equal to the line integral along the path P1 plus line integral of the electric field along the path is equal to 0, because minus R 1/RB plus 1/RB is equal to 0, 1/RA minus 1/RA is equal to 0, and the total work done is equal to 0. This is the line interior of the electric field around a closed path. Okay, thank you. नेक्स्ट सेगमेंट में हमारे पास आएगा उसमें what is electric potential and what is electric potential difference. Thank you.